Today we are going to learn the new topic, that is measure of dispersion. Now we will discuss what is the dispersion, what is the meaning of dispersion. Dispersion का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं डिस्पर्शन का, ये किसी एक पॉइंट से हमारे जो गिवन वेरिएबल्स हैं, जो एक्स की वैल्यूज हैं, वो कितना डेविएट कर रही हैं, कितना स्प्रेडनेस है, दैट वी measure under the concept of measurement of dispersion. So dispersion, in short में हम बोले तो dispersion is nothing but the deviation from a particular point. That particular point is majority of time is mean. We can find out the dispersion from the median also. We can find out the dispersion from mode also. We can find out the dispersion from median or a mean, median, mode or particular point. Generally, we use mean as a point from which we calculate the deviations of the given variable x, and then we find out the measure of dispersion using that concept. Let us understand what is dispersion in detail. Now let us take a case here. We have a three series of numbers a, b, and c. In number series a, we have all the numbers as 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 numbers are given and all the 9 numbers are 15. That means all the numbers are same. If we make the total of that, it total becomes 135 and the mean is going to be 15. 135 divided by 9 comes as 15. Take the series B. Here we have numbers like 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. And the total of that comes as 135. And we have 9 items here, 9 numbers here. So 135 divided by 9 comes as 15. Is it clear? Now let us see the third case here. The series 3, that is, we call that as a C series in this question. Numbers are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 35, and 15. Now, average is 15 here, total is 135. If you look at all the series together, that means series A, B, and C, their total is same, their mean is same. But if we look at the numbers here, A is consistently the same number. Series A numbers are consistently same. They all are 15. वो सबके सब क्या है? 15 है. उसमें कुछ भी deviation नहीं है. सारे के सारे 15 है. Constant number है. उसमें कुछ भी variability नहीं है. अगर हम B की बात करें तो B में numbers जो हैं एक एक increase होते जा रहे हैं. Till 16, 17, 18 and here it is till 19. 11 to 19 numbers are given, that is 9 numbers are given. If we add, it is coming as 135. Now, if you look at the deviation from a particular point, that is mean, here the mean is 15. If you look at this one, there is a 1 increase, 2 increase, 3 increase, and 4 increase on the positive side. Similarly, there is a decrease of the numbers from the center line 1, 2, 3, 4. That is the difference. If we look at the total of the series B, कितना आता है 135 आता है. कितने नंबर है टोटल? 9 आइटम्स है. तो ये 9 से जब हम डिवाइड करते हैं 135 को, हमें 15 आ जाता है. तो यहाँ पे डिविएशंस तो है, 15 से थोड़ा नंबर फ्लक्चुएट हो रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड एज वेल एज ऑन द नेगेटिव साइड. बट इफ यू लुक एट द थर्ड सीरीज, नाउ हियर नंबर्स आर far away from the 15 point, that is the mean here. Here it is 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27. So here scatteredness from the point 15 is more. Here if you look at the scatteredness from the point 15, it is less scattered data. And if you look at the first series, all the numbers are 15. That means they all are same and they all are at one particular point. Now, इससे हमें क्या पता चलता है? मीन तो सबके सेम आ गए, टोटल सबका सेम है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, बट ये जो सीरीज ऑफ नंबर्स है दे आर नॉट सेम. मीन सेम होने से या टोटल सेम होने से हम ये नहीं कह सकते कि ये तीन के तीनों सीरीज सेम है, बिकॉज मीन तो सबका 15 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबके लिए 9 था. स्टिल वी कैन नॉट से दैट द डेटा इज ऑफ सेम टाइप. Here, the first one constant. In the second one, there is a little bit difference from the main point.
and in third one there is a more difference as compared to the B. So C is having more variation as compared to B. तो डिविएशन जहां पे ज्यादा होंगे और जहां पे कम होंगे उस टर्म में हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे हमें मीन से ही सारी चीजें पता नहीं चल रही. सो वी रिक्वायर समथिंग एल्स टू कंक्लूड अबाउट a particular series, particular set of distribution, and then we will be in position to infer better information. Inference जो हमें निकालना है डेटा से वो हम बेहतर ढंग से निकाल पाएंगे. Only mean is not sufficient. That means we require something more, which will tell us what is the consistency, what is the reliability of the data if you're saying that this follows this distribution. Let us go to the next and we will have a little bit more about the same. Now here it is a definition indirectly. An average does not tell us the full story. As in the previous case, I have told you all of them are having the average as 15. So we are not in position to say that all the three are the same because in the series A, there is no deviation. In the series B, there is a small deviation from the mean point, that is 15. And in the third one, there is more deviation. So all those three data sets, that is set A, B, and C, are not of same type. We are here. They are saying an average does not tell us the full story. This is a very important point. It is hardly fully representative of the mass unless we know the manner in which individual items are scattered around it. उनका स्कैटरनेस मीन पोजीशन से कैसा है, whether they are more scattered or less scattered. जितना कम स्कैटर्डनेस होगा उतना ही accurate data बोला जाता है. A further description of the series is necessary if we are gauge. We are to gauge the representative, the averages. Average से हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो हमें कुछ और भी करना पड़ेगा जिससे हम ये श्योर हो जाएं कि डेटा किस टाइप का, किस ढंग का बिहेव कर रहा है और हम उसके ऊपर कंक्लूजन कर सके, कुछ उसके ऊपर हम कुछ प्रेडिक्शंस कर सके. So average does not tell the full story. So we require something else other than average to comment about the data. Let us go to the next here. A degree to which numerical data tend to spread over an average value is called the variation or the dispersion of the data. It is as per Dispersion. What he said that the degree to which numerical data tends to spread about the average. Average से कितना deviate हो रहा है, एवरेज के आसपास में कितना फैला हुआ है नंबर. जब हम ग्राफ पॉइंट को ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करते हैं तो हमें पता चलता है. मैं अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ग्राफ से लेके और फिर वहां पे आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है. Let us see this case. Assume that this is the mean point. Now if all the points are very close like this, then it will fall under the second category which we have done, like that is a B type. Now, if this is the B type, and when it comes to C type, the scatterness is more. Here it is your central value. One number is here, that is here, next one here, like that. इस ढंग से आपका स्कैटरनेस, यहाँ पे स्कैटरनेस ज्यादा है, तो दिस इज C type, and the first one जहाँ पे सबके सब सारे नंबर सेम थे, that will be the mean, and that there is no deviation of the numbers from this position. I hope the concept using the graph you have understood. You can make it as the x-axis. The arrows are not there, so if you want, you can add these arrows because we are using the x-axis and y-axis concept. Now हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन. मेजर ऑफ डिस्पर्सन का क्या यूज है, क्यों हम पढ़ते हैं. We first thing to find out the reliability of an average. Average कितना reliable है वो हमें पता करना है, तो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालना पड़ता है. ध्यान रखना, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में जब हम एवरेज की रिलायबिलिटी के बारे में हम टेस्ट करते हैं तो हमारा इंटेंशन ये होता है जो डेविएशन है वो छोटा हो. जितने ज्यादा डेविएशन कम होगा, जितने डेविएशन कम होगा उतने ज्यादा रिलायबिलिटी ज्यादा होगी. Second point, to control the variation of the data from the central value.
जब भी हम कुछ ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है और हमें पता है कि हमारा मीन प्रोडक्ट वेट इज अ पर्टिकुलरली अज्यूम एज अ 50 ग्राम्स। सो 50 ग्राम से कुछ पैकेट की वेट ज्यादा भी हो सकती है, कुछ की कम हो सकती है। तो वहाँ पे हम कंट्रोल चार्ट्स बनाते हैं। कंट्रोल चार्ट हमें हेल्प करता है कि हमारा सिस्टम या हमारा प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, वेदर मशीन इज आउट ऑफ सर्विस है, मशीन इज फॉल्टी, लाइक दैट, वो सारी चीजें हमें पता चल जाती है। तो उसके लिए हम डिस्पर्शन फाइंड आउट करते हैं, डिस्पर्शन का यूज करते हैं एक्चुअली उसमें। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू कंपेयर द टू और मोर सेट ऑफ डेटा रिगार्डिंग देयर वेरिएबिलिटी। जैसे भी हमने आपको बताया कि जितने ज्यादा डेविएशन होगा उतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगा। दैट मीन्स वेरिएंस विल बी हायर if there is a more uh, deviation of the given set of data from the mean point. So whenever we have to compare two data set, what to do? We will be calculating mean and we will be calculating variance. Then we will be using the formula that is a coefficient of variation, and then we will come to know which one is having the more variation, which one is having less variation. Always remember, the less variation gives the more variability. Coming to the next, to obtain the statistical measure for the further data analysis. Now, what we do in this one, see, जैसे अभी हमने बताया आपको, हम फ्यूचर में जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे जहाँ पे हमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, वहां पे हम क्या करेंगे कि ये जो मीन एंड एसडी है उसको हम बेस लेंगे, दैट विल बी द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द डेटा एनालिसिस। In that case, this part, that is standard deviation, help us to find out some different analytical things. Like when we use that as we use the standard deviation at the denominator. Is it clear that standard deviation is nothing but the deviation? We will be doing that in detail in the coming lectures. Let us go to the next concept. Characteristics for an ideal measurement measure of dispersion. एक ideal measure of dispersion की क्या क्या qualities होनी चाहिए? The first thing, it should be rigidly defined. The definition part is clear. There should not be any ambiguity in that. The second point says that it should be easy to calculate and easy to understand. When it comes to statistical calculation, if it is very complicated, people will not take interest in that. So it should be easy to understand. Is it clear? And it should be like how to. The question was, it should be easy to calculate and easy to understand. जब भी हमने कैलकुलेशन के बारे में हमने बोला कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा तो हम उसमें परेशान होंगे, हमारे हमसे वहां पे गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो हमारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। सो व्हाट शुड बी देयर, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट। Sometimes numbers are large, it becomes difficult to do the calculation. So you can say that the numbers you have to take as a smaller one. But in the real life problem, we cannot say कि किस type का problem हमें मिलने वाला। Next part of the same point says that is it easy to understand. जो भी हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं डिस्पर्सन निकालने के लिए, मेजर ऑफ डिस्पर्सन जिसको हम बोल रहे हैं, तो वहां पे अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होगा देन अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो अच्छी नहीं होगी और फिर वहां पे प्रॉब्लम शुरू होंगे। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। जैसे हमने आपको बताया कि मीन में सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर किया जाता है। दैट्स व्हाई मीन इज अज्यूम्ड टू बी द बेस्ट एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर जिसको हम बोलते हैं। नाउ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ेंगी, हमारा कैलकुलेशन इजी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, एंड जब कभी भी हम कोई भी टूल यूज कर रहे हैं तो वो हम ये ध्यान रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट से ऑल द ऑब्जर्वेशन शुड बी कंसीडर। अगर हम देखें मीन एंड मीडियन के बीच में कंपैरिजन करें तो मीडियन में क्या होता है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर देते हैं और मिडिल नंबर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि लोअर साइड एंड अपर साइड में अगर हम नंबर्स बढ़ाते हैं तो कोई भी फर्क मीडियन में नहीं आता है क्योंकि मिडिल पोजीशन पे जाता है। क्योंकि अगर एक नंबर हम स्मॉलर नंबर फ्रंट पे ऐड किए, एक बैक साइड में ऐड किए, स्टिल योर मीडियन विल रिमेन सेम। मीडियन इज अ पोजिशनल पार्टीशन वैल्यू। तो
जब कभी भी we should be like as per the point says that it should be based on all observation. Next point is it should be amendable to the further mathematical treatment. ऐसा नहीं कि हमने नंबर तो कैलकुलेट कर लिया बट उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं. तो जब हम उसको यूज करेंगे तो ही हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होगा. यू कैन से दैट हम उसको यूज करके फ्यूचर के बारे में या फिर कुछ दूसरी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारे काम की होगी. नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट इट शुड बी अफेक्टेड a little as possible by fluctuation of sampling. जो भी हमारा डिस्पर्सन का होता है क्वालिटी ऑफ डिस्पर्सन जो हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन जिसको हम बोल रहे हैं इट शुड नॉट फ्लक्चुएट टू मच व्हेन देयर इज अ स्मॉल फ्लक्चुएशन इन द mean variable. Last point says that it should not be affected much by extreme observation. See जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर हम मीडियन लेते हैं तो वहां पे एक्सट्रीम नंबर जो है लास्ट नंबर वो कितना भी बड़ा हो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं होता उसकी हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है. But when it comes to dispersion, we should have the concept like it should not be affected by extreme observation to the extent. Is it clear? Let us go to the next point. Absolute and relative measure of dispersion. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या होगा कि जो यूनिट में हम डेविएशंस निकालते हैं वो यूनिट वही रहेगा उसका यूनिट चेंज नहीं होता है. सो इट इज इन ओरिजिनल यूनिट. लेट्स टेक दैट हमारे पास एक डिफरेंस निकाला हमने डेविएशन निकाला. डेविएशन केम टू बी डी. इट वी अज्यूम डी इज इक्वल टू largest value minus the smallest value. It comes as assume as a 10 centimeters. Now this data is in the centimeter which is given unit. So this part, this method, we call this as a range you can say. Range we got as L minus S where it is L is 10 centimeter, S is 10 centimeter, one of the values given. Here L minus S we are taking that as a 10. The unit is centimeter. So whenever you have the unit with the range or any other dispersion, then we say that it is absolute measure of dispersion. Now, majority of time we try to use the second one, that is a relative measure of dispersion. Now, when it comes to range, if we take the relative measure of dispersion, we call this as a coefficient of range. Coefficient of range. That will be L minus S upon L plus S. Is it clear? The coefficient of range is L minus S upon L plus S. Range is nothing but largest value minus smallest value. Now let us go to the next concept here, measure of dispersion. The various measure of dispersions are range, quartile deviation, we call that as a semi-interquartile range, mean deviation, and the fourth one which is not here, that is standard deviation. Is it clear? So here we are going to learn all these four measure of dispersions. The first one, the most easiest one is range. What is the range? It is the largest value minus smallest value. I hope the concept is clear till this. Next is quartile deviation or semi-interquartile range. We use this one also to calculate the dispersion. We have a mean deviation and the last one is a standard deviation. I hope the concept is very clear to you all. In the next class, we will be having the numericals based on range, coefficient of range, and we will be having some more topics in that also. So till that, make the notes, take rest, enjoy the life, and if you have felt like that this is a little bit interesting video which is contributing something to your studies, then like करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए.